Just because of type of slash, it was showing the error. Can you see? Now I am having entire piece of chunk of data set in my local machine. This just inherited using coding. आपके मशीन पर है, आपके क्लाउड पे है, आपके SQL सर्वर में है CSV फाइल. You can fetch any data here in the Python. आपके दूसरे बंदे के IP एड्रेस पे है, किसी वेबसाइट पे है. That's called web scraping. Anywhere, any accessible portion can be inherited in this local machine, right? So what's the, yeah, please go ahead. Sir, if it is in another machine, like this I will copy it from the other machine and I will keep, then it will fetch the data. Yes. So sometimes what happens, people fetch data from GitHub directly. We will see that we will learn data science and machine learning algorithm. We will fetch this data from GitHub directly, right? So we don't need to download, we don't need to perform these conventional method like आप copy करो. और अगर आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये प्रोसेस दिखाओगे ना तो वो बोलेगा भाई क्या पहली बार आया क्या IT कंपनी में क्या? तो मतलब लाइक वही वाला ना कि सिक्वल वाला आपने सुना ना वो जो कि मैंने कॉपी करा दिन भर बैठ के उसको, तो वो बोला कि तुम सिक्वल डेवलपर हो, तो मुझे पता चला आज पहली बार तुम सिक्वल डेवलपर भी हो. सुना आपने वाला जो? हाँ देखिए ना वो रील. हाँ, so वो सिक्वल डेवलपर था, वो जो सारे कोड को एक एक करके सारे वो कर रहा था. तो उसने बोला अभी तक शाम हो गई, यू हैव नॉट डन एंटायर फाइल. तो बोला देयर इज अ सिंगल कमांड इन द सिक्वल, यू कैन डू द फाइल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. तो वो चीज आपके साथ ना हो तो बट गो स्लोली वन बाई वन स्टेप. तो इतना नोवाइस आप ना बनो, उस डोमेन से एटलीस्ट बाहर आ जाओ, राइट? So what's the motive of these this value? We do not do in the IT company कि भाई यहाँ they will give you like your client will give you virtual server. Again one technical command. So मैंने पहले ही session से कहा है, I'm stating from session 1, learn technical words. So I had just I had used this virtual server. Anyone can explore a bit more about this virtual server? What actually virtual server here? Anyone? It's a database where we can fetch the files of the company. It's not the database actually. Data center, there is from there we will not the data center actually. Different network. Okay. Anyone else? I need more responses. I'll wait for 10 more seconds here. Anyone? Can I get more responses regarding virtual servers? Okay. In IT companies, they provide credentials for virtual servers. What does it mean? Sir, there will be space, they will be giving, like for an example, there is Google servers, the space they will be providing, but that anybody can see, anybody can access like that. Is it so? Little bit. Okay, let me explain, right? You all are correct, but partially correct, right? जिसने बोला data, that's also correct, but not fully correct. जिसने बोला data center, that's also correct, but partially correct. Data center is something bigger. बहुत बड़ा आपने नाम ले लिया. In this data center, let's say AWS का data center हैदराबाद, बेंगलोर में है. They are having millions and billions virtual servers. Got it? Like Gmail, like Google के अंदर millions Gmail accounts हैं. Similarly, if I want to access your laptop using credentials, so how would I do? मैं एक यूजर नेम पासवर्ड की हेल्प से आपका पूरा लैपटॉप क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, ऑन कंडीशन दैट मीन्स यूजिंग माई लैपटॉप ओनली, यहाँ बैठे ही बैठे, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग वर्क फ्रॉम होम एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट अक्रॉस द कंट्री. एज आई सेड, इन आवर कंपनी वी हैव 4 like 10,000 एम्प्लॉइज. सो मैनेजर
can access your laptop using this virtual server, but cannot copy even iota of dot or space or data or Excel sheet in not even a single dot in their local laptop. उनके लोकल लैपटॉप में वो डेटा का कोई भी कॉपी पेस्ट परफॉर्म नहीं होगा. वंस यू लॉग्ड आउट और मिनिमाइज दैट वर्चुअल सर्वर, you just came out from that. You cannot copy paste from that. And this virtual server is provided by cloud, mostly AWS, GCP or Azure. They provide these virtual servers, and of course they are paid. Pay per use. सर वो एनी डेस्क है, वो वही है, ऐसा ही है एनी डेस्क? Kind of, yes. Right? So you have their data set, yeah, like your client's data set is there. अब आपके क्लाइंट का डेटा सेट उस वर्चुअल सर्वर पे है. नाउ यू कैन प्ले अराउंड. यू हैव दिस डेटा सेट इन योर क्लाइंट. आप उस पर काम कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, उसको क्वेरी परफॉर्म कर सकते हो सीक्वल की, पावर बीआई के डैशबोर्ड बना सकते हो, टैबलो में ऐप, मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकते हो, पावर एप्स में मोबाइल का इंटरेक्शन क्रिएट कर सकते हो. बट यू कैन नॉट कॉपी दैट डेवलप्ड कोड इन योर लोकल मशीन. वो जो काम किया वो वहीं रह गया उसी वर्चुअल सर्वर में. दैट्स इट. नेक्स्ट डे यू विल कम बैक टू अगेन. अब आप अपने कोड को, यू विल फिनिश योर कोड, मूव अहेड, एंड दैट माइलस्टोन विल बी देयर ओनली. Someone else will access that virtual server and he will finish his or her work and will keep continue this one. Or multiple it depends upon role also कि multiple people will access this data set or virtual server and everything. This is called एक तरीके से virtual laptop आप कह लो, virtual operating system I would say, right? Now, so this is the ground reality. आपको कभी ऐसे ठप से या किस पे डेटा नहीं मिलेगा. आप ये कुछ सोचो ना, डेटा लेने के लिए कंपनी मिलियन से बिलियन डॉलर पे कर रही है. आप उसका डेटा चोरी करके मार्केट में बेच रहे हो, तो करोड़पति तो आप बन रहे ना. कंपनी तो मतलब बेवकूफ बन गई. तो डेटा इज वैल्यूएबल दीज डेज, right? So go back here. The company never allows, your client will never allow you to, like it's a data breach. Like आपको जेल हो सकती है कि अगर आपने डेटा को कॉपी करके अपने सिस्टम पे रख दिया या आप कहीं किसी को मेल करके भेज भी दिया. So there are judiciary norms. Okay, let's go ahead. The companies are very strict with the files, everything. df.head is another function name where we are tracking first 5 records by default, right? So first 5 records we are having this one using head. If someone is writing these codes, that would be very good, very appreciable and remarkable, because we will have so many functions here. बहुत सारे functions we are going to encounter here, right? So allow me to close all these files. Okay. So we have head, and if I'll write, suppose let's say 12. So now we have first 12 records here. Can you see the index number? Starting from 0 to 11, we have first 12 records. If you have previous section, we have 0 to 5, 0 to 4, right? Now we have, and one more thing with respect to this one, like in this one, in IT company, they are very strict for social media also. वो आपके सोशल मीडिया को भी ट्रैक करते रहते हैं कि अगर आप किसी से अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस तो नहीं कर रहे हो, आप कोई शेयरिंग तो नहीं कर रहे हो कि आप इस टीम के ऊपर काम कर रहे हो. सो दे आर वेरी रिस्ट्रिक्ट ऑल्सो. सो similarly we have tail. So once I am giving this tail, so this is the last index in my sheet, 1337. If I am going to click this one, insurance premium, so here we have, if I scroll down, so I'm having last indexes 1338. Can you see? So starting from 1, so 1338, right? So ID number 1338, but starting with 0, so the total 1337. But if you look at the ID index number, it's exactly same, 1338. Now the next command we can go for the quick checking for this data frame is called
bf2 dot sample. Can you see? Yes. There were only 8 entries in the Excel. Okay. So from where did this 3, 4, 5, 6, 7, 8. Index number by default, they provide their index number. 1, 2, 3, 4, 5, means 6, there 7, are 8. 1337 entries in this Excel file? Yes. Okay, okay. These rows are called records. This column wise called fields. Okay. Right? So we must know these fields, these columns are called fields, and fields or features. We will sometimes they use features, right? Sometimes they use like characteristics also, right? These are characteristics, right? And when we go along row wise, so what do you call it? You call it records. We have, so I'll say we have 8 fields in data science language. Do not call it columns. We have 8 fields here. When we have row wise, so we do not call it rows, rather we will call it records, right? So what's the records here? So suppose I'm having this website, right? If I'm having these entries here, so if you will enroll in this website, you will have the enrollment form, right? Submit the course options here and right. So suppose I'm going to see the results, how many people have enrolled in my sheet. You can see this is the records. So every candidate is record for me. Every query is record here. Can you see this? Pratish Jha and everyone email ID, right? And this course, and in which course they are interested is again the field, and everyone having different. If you can sort the data set, like how many people are interested in data science, machine learning, and so on, right? Okay. Now we can download this sheet, and you will have download option at the bottom side, download, and in the local machine you will have enrollment candidates list. Can you see? If I like, what are other fields, right? So these are submission date, submission others, right? I can delete all these values, right? So this is actually the original data looks like, right? कि वो IP सर्वर को भी लेके आएगा, आपके इंडेक्सिंग को भी लेके आएगा, किस पेज से कैंडिडेट ने किया है एक्सेस, राइट? किस टाइम पे किया है, टाइम स्टैम्प also initiated there, right? And can you see this IP address also included here, right? So this is the actual data look like. कि इतना आसान नहीं होता है जब डेटा हम यहाँ से देखो. This is also including timestamp, time series data set, right? This is also another field, right? So you need to perform some pre-processing. What's the pre-processing? If you wish to delete this one, I can delete this one, and I can delete using Python sheet also, right? So now this is the final output for me. Okay, let me close this one, and this is the very clean data, but you have seen the actual ground truth is entirely different, right? अब second candidate मुझे enroll करेगा इस sheet पर, that would be another records, right? Another query होगी मेरे data के लिए, right? So I'll go row wise row. Now I'm having sample. I'm having 363. Right now it's showing 363. If I'm going to run this code, can you see it's showing 706? I'm going to run this code, it's showing 833, which means randomly picking from my records, row wise, randomly picking any sample. If you go write some integer value here, let's say I'm writing 3 here. So here I'm having 3 samples. You want to check नेचर, आपका पैटर्न क्या है डेटा का, आपकी हेट्रोजेनिटी क्या है, होमोजेनिटी क्या है, यू वांट टू चेक रैंडमली, कोई मोनोटोनस तो नहीं है. So here we have next 3 samples. If I'm going to simply running this sample, it's showing random 3 samples out of it. Now I'm having bf2.info. So going to run this code, it's showing respective data type
their count, their column names, and can you see we have one float value, 4 integer value, and 3 objects. What's object? Gender, smoker, and region. These are consist of string और character. जहाँ कहीं पे non integer और non numerical data होता है, they call it object everywhere, right? Then we have df2 dot describe, and we have these values. Can you see? It's showing entire statistic. Now my question to all of you, I need more responses this time. Initially I had 8 columns, 8 fields. Now I'm getting only 5. Why so? So you can see यहाँ पे count दिखाई दे रहा है, mean, that's the average of entire column. Standard deviation है, this is the minimum, this is 25 percentile. We will learn more about this percentile, how percentile is different from percentage, but this is the percentile, not the percentage. This is 75 percentile, this is the maximum out of the given column. But why it's showing only 5? That's my question to all of you. Only numeric fields लिए. Wonderful. Good, really good. Anyone else? The statistic description associated with only numerical values automatically is keeping characters, these object values here. Or in either terms I can say किसी भी non-numerical जैसे male female है या cat and dog है, how would you find standard deviation? How would you find mean? How would you find the minimum value, right? Or 25 percentile, 75%? You cannot. That's the only reason we have these random values or the statistic of this one, right? Okay, so shall we continue this data frame tomorrow? Do we have any question, any query? Sir, there's a chances to in the column might be a string values and both the numerical and non-numeric values. String values, Non-numeric and numeric values, ma'am. There's some chances because data can be any type, right? I didn't understand. Can you give any example? Example कि एक ऐसा column है जिसमें कुछ numeric values भी हैं Okay, like my address. और non-numeric values भी हैं उस column में. Like you mean to say like my address? My address is A13 Shastri Nagar. Yes, we can. Right, and this pin code also. Yeah. So how it will consider? 243122, right? So for this, what will you do? Suppose you need to extract the house number separately, right? So what we will do, we will perform some pre-processing there, right? We will create separate column out of the given field. तो वो separate columns के जो functions हैं, वो जो operations हैं, जो उनके commands हैं, वो क्या करेंगे? इस 13 को इसको 3 different columns में separate करेंगे first, right? फर्स्ट करेंगे राइट, फर्स्ट करेंगे यहाँ पर केवल 13 होगा और इसको एक दूसरा नाम दे देंगे 13. सेकंड करेंगे यहाँ पर पिन कोड होगा और तीसरा करेंगे कि केवल जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो वहां पे स्टोर करेंगे. यू कैन गिव कस्टम नेम ऑफ दिस कॉलम, then only you can perform a statistic operation there. Until unless you cannot go for the special characters. This is called special character or the random or the mixed format. This is the array of string. We cannot perform static operation for this. 100% ये show होगा ही नहीं if it is mixed kind of. Any other question? हाँ, only. अगर describe मैंने उस पे चला दिया तो उस कॉलम को वो डिस्कार्ड कर देगा काइंड ऑफ. स्कीप करेगा 200% स्कीप ही करेगा. No single operations. Any other question regarding career, regarding IT companies? Questions? Yes sir, I have. Yes, sure. Go ahead. अभी सर मेरा BCA में मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ और मेरे को अभी 2 स्पेशलाइजेशन है, उसमें से एक चूज करना है. तो एक है मोबाइल कंप्यूटिंग और दूसरा है क्लाउड. तो ऑलमोस्ट
हाँ, Go with हमारा cloud. ऑलमोस्ट पूरा क्लास का क्लाउड का ही है, तो And मोबाइल उन्होंने again, बंद कर दिया। which cloud? Which cloud? Cloud is very AWS. fast. AWS, 100%. Go with cloud. यस, वी डिसाइडेड टू हैव क्लाउड। तो उसका कुछ स्कोप है डेटा एनालिटिक्स में? 100%। ये सारी चीज जो हम लर्न करेंगे, मैंने आपको हम्म। क्या बोला, कंपनी में जो सारा जैसे पाइथन का कोड होता है, जो भी पावर बीआई का प्लेटफॉर्म है, जो भी सीक्वल का प्लेटफॉर्म है, जो कि टैबलो का प्लेटफॉर्म है, एप्स का प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट डिजाइनिंग का प्लेटफॉर्म है, ये सारा का सारा मोल्ड हो चुका है क्लाउड पर। ओके। इन इन फॉरेन, अगर आप फॉरेन कंट्री में कहीं जाओगे तो आपको अब फिजिकल दिखाई ही नहीं देगा कहीं पे, ऑफलाइन है ही नहीं वहां पे। दे ऑल हैव स्विच टू क्लाउड एनवायरनमेंट, बट इन इंडिया वी आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स द क्लाउड। बट क्लाउड पे आप जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सर हम वर्चुअल कर क्या रहे हैं, वर्चुअल हम सीख रहे हैं। पहले हम हो सकता है अगर ये वर्चुअल नहीं होता, मीट नहीं होती, तो हम फिजिकली आमने सामने बैठे होते हैं, राइट, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। बट वी हैव दिस ऑप्शन, तो हम इन वर्चुअली बैठे हुए हैं, कनेक्टेड हैं। सिमिलरली क्लाउड है, क्लाउड एक हार्डवेयर डिवाइस, जैसे कि सपोज एक आप कैफे में जाओ, राइट, कैफे में सबसे ज्यादा सेल कब होती है, सैटरडे संडे को होती है, राइट। सो इन एंड दे आर हायरिंग 2 एम्प्लॉइज, राइट। अब वो 2 एम्प्लॉइज से भी वो जो भीड़ है, वो जो सारे जो लोग हैं वो फेस नहीं हो पा रहे हैं। लाइक मैकडी में ही आप सोच लो, या आप सीसीडी में गए, आप मैकडी में गए, वो 2 लोगों से एनकाउंटर नहीं हो रहे। अभी आपने हायर किए 4 और कैंडिडेट्स, आपके पास 6 कैंडिडेट्स हो गए। 6 कैंडिडेट्स की आप सैलरी दे रहे हो पूरे 7 डेज क्रॉस 5, मतलब 30 डेज की सैलरी दे रहे हो। बट आप उनसे काम कितने दिन ले रहे हो, ओनली 2 डेज। आपका पर्पस क्या था कि आप केवल 2 डेज का जो क्राउड था, जो बहुत पीक क्राउड होता है सैटरडे वीकेंड्स का, सैटरडे संडे वीकेंड्स का, और पब्लिक हॉलीडेज जैसे 15 अगस्त हो गई, ईद हो गई, दिवाली हो गई, आपने उसको करने के लिए आपने उनको पूरे मंथ की सैलरी यू विल हैव टू पे देम। नाउ वी हैव कम अप द सॉल्यूशन। व्हाट्स द सॉल्यूशन? ओके, you come only days Saturday and Sunday, we will pay only for Saturday Sunday only. If you come on 15 August, we will pay for one more day. If you come on Eid, so we will pay for Eid only. This is the concept of cloud. ये concept cloud का। Now which one option is more cheaper? Cloud, है ना? This is the only reason company are avoiding परचेज फिजिकल स्टोर। अभी उन्हें बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, उन्हें 4 फ्लोर्स की, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग देखते हो, इन्फोसिस की बिल्डिंग देखते हो, विप्रो की देखते हो, नगारो की देखते हो। दे डोंट नीड दीज फिजिकल स्पेसेस नाउ डेज। एक सिंगल लैपटॉप में पूरा कंपनी इंकैप्सुलेटेड है। नाउ दे डोंट नीड टू परचेज एनवीडिया का प्रोसेसर, खरीदने की जरूरत ही नहीं है। नाउ दे आर हैविंग पेपर ऑन पेपर यूज इन क्लाउड। अब उन्हें एनवीडिया का जो प्रोसेसर है क्लाउड एक्सेस दे रहा है, और उसके बेसिस पे वो का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। दैट्स इट। आपकी वेबसाइट आपने क्रिएट करी, उस वेबसाइट पे केवल शाम को ही क्राउड आता है। उस क्राउड को हैंडल करने के लिए आप वेब सर्वर का बहुत बड़ा अमाउंट क्यों पे कर रहे हो? व्हाई आर यू पेइंग सो मच डॉलर फॉर हैंडलिंग दिस मच क्राउड, जबकि आपके केवल शाम के 2 घंटे ही उस वेब सर्वर पे क्राउड आता है। आपने क्या करा, क्लाउड में एक प्रोग्रामिंग कर दी कि ओनली 5 to 7 PM मुझे ज्यादा प्रोसेसर्स की रिक्वायरमेंट है। आई नीड मोर सर्वर, मोर सुपर कंप्यूटर नीड, सो आई टेक ओनली दीज 2 hours, इवनिंग के 2 hours में ही चाहिए, IST, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। तो उन्हीं के 2 hours में आपको क्या करेगा, आपके सर्वर में वो ब्लॉक्स ऐड कर देगा। ब्लॉक्स मतलब मोर हाई परफॉर्मेंस के प्रोसेसर्स ऐड कर देगा, और आपका जो ट्रैफिक है वेबसाइट पे वो हैंडल हो जाएगा, आपकी लीड जनरेट हो जाएगी। दैट्स इट। अब आपको बाकी 22 आवर्स के लिए पे नहीं करना है सर्वर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड। ओके। सर अभी मेरा 1 या 2 मंथ से प्लेसमेंट भी चालू हो जाएगा BCA का। ट्राई टू क्वालिफाई क्लाउड सर्टिफिकेशन। क्लाउड का फाउंडेशन सर्टिफिकेशन होता है, देन टेक्निकल होता है। रेस्ट कैन लीव इफ दे डू नॉट हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, और दे आर लिसनिंग, दे कैन कीप कंटिन्यू। बट अभी टाइम नहीं है ना, लेकिन 2 मंथ में तो चालू हो जाएगा फटाफट। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? यप। You see cloud certification,
15 डेज, मैंने लोगों को देखा है 15 डेज में प्रिपेयर कर करके वो लोग सर्टिफिकेशन क्लियर किए हैं. कैन यू सी, कैन यू सी दिस हायरार्की? फर्स्ट इज दिस वन, which certification you should choose. इसके बेस पे भी एक होता है. This is the here we have, right, here we have cloud practitioner, foundational के आप स्टार्ट करो. यहाँ से आप सर्टिफिकेशन क्लियर शुरू कर दोगे तो जब इंटरव्यू में सामने वाला होगा ना, उसका कॉन्फिडेंस आपको देख के ही लूज हो जाएगा. वो कहेगा भाई तू ही सर्टिफिकेशन क्वालिफाई है तो मैं अब तेरे से क्या क्वेश्चन पूछूं. This is the reality. People are working on AWS cloud. People are having realistic project in AWS. They know hands-on practice in AWS. Still, they are not able to qualify. They do not have much time to qualify or read about these certification and qualify the certification. But once they qualify the certification, उनका salary 2 times 3 times. और अगर आप आने वाले 2 months में ये क्लाउड प्रैक्टिशनर्स का कंप्लीट कर लेते हो, then 100% you will be placed. And what is the, okay, let me go for the cloud practitioner syllabus. You will be surprised कि जो हम सीख रहे हैं वो ही क्लाउड का वो है सिलेबस है. Data pre-processing, data part, can you see we have the solution architect, right, data cloud engineer, right, develop, construct, maintain, right, integration, right. So they have all the same part, same machine learning. Can you see machine learning engineer, AI system, artificial intelligence system, models, good knowledge exam, then this one, right. So they have same concept. ओके. और सिर्फ एक डाउट है. Yes. कि हम लोगों का मतलब एक केस में दिख रहा है कि कोडिंग के लिए उतना लॉजिक डेवलप ही नहीं हो रहा है लोगों का. किसका? आपके कॉलेज में? हाँ, नहीं, मेरा भी है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी है. हम लोगों को सेम ही इशू हो रहा है कि कोडिंग में वो लॉजिक ही डेवलप नहीं. डेटा कैम्प से स्टार्ट किया? क्या कैम्प, डिड यू स्टार्ट डेटा कैम्प? नहीं स्टार्ट. मैं आपको बताता हूँ कि डेटा कैंप में बहुत अच्छे जो हैं वो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग पेड. मैं आपको जो भी बताऊंगा कुछ भी पेड वाला नहीं बताऊंगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप डेटा कैंप की साइट पे जाओ, वहाँ पे हैंड्स ऑन, वो डे 1 से हैंड्स ऑन शुरू करते हैं और हैंड्स ऑन से ही खत्म करते हैं. कोई थ्योरी नहीं है वहाँ पे. लाइक कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं क्या? हाँ. ओके. So I'm going to use logout into Google. It's same tutorial. So if you search for the Python here, so you have so many. We have 67. अगर आप एक कोर्स को एक भी करते हो, how much time do you require? How many days? 167 days do you require to finish it. एक तरफ पकड़ो और उसको पकड़ते ही चले जाओ बस. आप इधर उधर देखो ही मत. Next time you come in my session, you just tell me how many XP you have scored. Introduction to Python में गए, आप देखो फर्स्ट चैप्टर जो है that would be free of cost. Start chapter, get 550 XP, 100 XP if you'll give correct solution there. तो यहाँ पर पाइथन इंटरफेस कैसा होता है, जैसे अदर वेरिएबल टाइप्स पे मैंने क्लिक किया तो आप देखो एट द लेफ्ट हैंड साइड we have theory instructions and at the right hand side we have this values, right. आपको यहाँ पे पढ़ना है, जैसे suppose I am having half is equal to 4.5, right. That's the first variable. Then they are saying intro, it should be the context number, right. This is the very basic question. So but you will have a complex query also, right. इसमें complex के बहुत सारे courses हैं. The moment you will grow here in the same portal, you just run the code. Can you see? I don't find any error at the portal. ये एक shell आपको देगा कि यहीं पे आप Python का code run करा सको. Once this is giving correct output, you can submit the solution. Then can you see 100 XP
So आज के Yes. दिन में मेरे को 100 कैन यू सी डेली एक्सपी 100 क्योंकि मैंने अभी एक 100 करेक्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है तो आई हैड 100 एक्सपी हियर एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट नथिंग टू पे एंड नाउ यू हैव इंस्ट्रक्शंस कि अब ये कौन सा टाइप था ये कैसे करके राइट इफ यू गो मोर बियॉन्ड दिस हियर सो यू विल हैव टाइप कन्वर्जन कैन यू सी द कोडिंग पार्ट just read Yes. the instruction finish this lesson ऐसा मैंने सेम इसका किया था कोड शेफ का 73% हुआ लेकिन उसके बाद उसने पैसे मांगे तो बंद किया वो now you move to the gate data again you will have more realistic with it Okay sir, thank you. thank you so much have good day